All I dream of is love. Very intelligent. Hey, I appreciate the opportunity. All I dream of is your eyes. Ah, Hi Anand, बस आज इसमें क्या कह रही है? कुछ तो है ही। तो शूटिंग रेंज वगैरह भी करके आ जाते हैं। उधर सीक्रेट टेंट भी कर लेंगे। ट्रैकिंग भी करके आते हैं, चलो फिर। महीनेश, ये तो फर है। विंदर कुमार। What do you think about the visit case? भाई मैं इतना इन्फॉर्म नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक लड़के ने चीट किया है, जिसने भी चीट किया है। भाई, जितने भी टॉक्सिक हैं, चीटिंग शुड नेवर बी जस्टिफाइड।
मैंने सुना है बहुत। हाँ जो भी है, चीटिंग इज नेवर जस्टिफाइड। तू उसे बोल दे यार कि ओके यार, तू इतनी दिमाग खराब कर रही है, मेरे से नहीं हो रहा अब। लाइक आई डोंट थिंक इट्स गुड टू चीट। दैट्स इट। दैट इज माय ओपिनियन। But that girl is gold digger. So if she is a gold digger, fuck off पुलिस। हाँ, तो फिर छोड़ देना उसे। तू मतलब चीट क्यों करेगा? That's what I'm thinking। मतलब मैंने बोल दे नहीं कि रहना मुझे, और बाय गुड बाय। ऊपर प्रेग्नेंट करके छोड़ रहा है मादर चोद। तो अगर गोल्ड डिगर है तो ठीक है, तू चीट कर सकता है मतलब। यू कैन प्ले विद समवन्स इमोशन इफ दे वांट मनी। All I dream of is You hit me, punk. I'ma hit you back. he has a video in which he's saying that Arishit should date others while being in a relationship. So that is bad advice from her. तो भाई, शी इज बैड, ठीक है, मैंने भी नहीं बोला कि शी इज अ गुड पर्सन, लेकिन इफ अदर्स आर बैड, यू योरसेल्फ शुडंट बिकम बैड भाई। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब लेकिन चीट क्यों करेगा तू? उसे बता दे, हेलो ब्रो, आई एम नॉट गोइंग टू बी विथ यू। भाई आई एम नॉट डिफेंडिंग her, एक तो चूती है, लड़की भी चूती है ये। वे भाई, मेरे को घंटा नहीं पड़ता, मैं नहीं हूँ इतना एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में। हूँ मतलब मैं आई एम इन रिलेशनशिप, लेकिन जो भी है, what bonds each other is trust। That's all I know। दोनों ने एक दूसरे का दस सुना है। उसको बैड एडवाइस दे रही है, और पता नहीं क्या हो रहा है। But cheating is never justified, that's what I'm saying। Be it wizard with wizard Liz or fucking Sati Mata or something, I don't know। What's your problem, homie? When given choices, do you mean? So why would you impregnate her if you don't like her? Why would you give her a burden? The ऊपर वाला part, she also said that I will save my cat rather than his boyfriend। So that is toxic from her, so you should leave her, that's what I'm saying। छोड़ दे उसे, मादर चोद, उस मादर चोद लड़की को। मैंने कब बोला कि उसके साथ ही रहे हैं? नो, शी इज द बेस्ट, शी इज मॉमी, इसलिए मैंने बोला। हाँ तो ट्रकिंग मिशन अनलॉक क्यों नहीं है? हेलो, अच्छा बोल रहा। हाँ तो मुझे अभी जाना था जिम में। ओके। Hey, I need this. इफ योर गर्लफ्रेंड इज बैड, वुड यू चीट ऑन हर? चीटिंग इज अनदर थिंग एंड लिविंग हर इज अनदर थिंग। बोथ विल गिव हर इमोशनल, यू नो, बैड स्टफ। आज लेग्स करेगा, आज नहीं जा रहा मैं। Oh, I owe you one now, homie. थैंक्स फॉर कंटेंट बाय द वे अनंत। Careful, partner. That's it. Keep breathing. Yo, you want to learn some new moves?
आजा। हट हट मार। ये ले ये ले। ये ले। हिल गया। तेरा खेल खत्म है पप्पू। better know how I hit. Get up. Yo, pay attention and you might learn something. आज मैंने रेस्ट ले लिया, कल किया था Kill लेग्स। your opponent. सॉरी, शोल्डर। लेग्स नहीं कर रहा इस हफ्ते, अगले हफ्ते से करूंगा फिर। मैं यहाँ पे Move your सबको मार opponent देता था। down and out. हाँ, मजा आता है यहाँ। Never अबे give up on टाइम्स your व्हेन आई opponent. यूज्ड टू आस्क यू कि क्लब कहाँ है। क्रेजी शिट। हो गया। ओके। अब चलते हैं, ट्रैकिंग करना है ना। हो गया, सेव करके चलते हैं। शिट। सेव हो जाइयो। Kiss my ass. Don't make me get out my car. सेव हो जाइयो, मुझे लग रहा है फटने वाला है। ओ माय गॉड। सीजे रिटर्न्स टू द ग्रोव स्ट्रीट while Tenpenny says he would get killed if he ever steps foot in Los Santos again. Boyle Riddhi follows Lizard. भाई नहीं। और why the fuck are you saying this on a fucking public live which she could possibly see? मतलब नहीं देखेगी। हाँ तो हाँ। अबे भाई, वो तो सही है यार। मेरे को रुक जा, तेरे को बताऊंगा, रुक जा, डीएम में बताऊंगा। तेरे को बताऊंगा यार। इधर नहीं बता रहा। हाँ तो मुझे सेव किया मैंने, हाँ किया। हाँ तो कहाँ जाना था मुझे, अभी ट्रैकिंग मिशंस पर जाना है तो फिर एयरपोर्ट जरूरी नहीं है। ड्राइव करके चलते हैं, मजा है। Oh my god, a lizard cheat on wizard. How could he do this? Hey, how could he do this? She support her also. Nice. Good. पता नहीं। I mean, शायद इसलिए क्योंकि चीट तो नहीं करना चाहिए था, जितना भी चूती है लड़की। He should have instead peacefully left her and asked for alimony. Those who know. alimony marriage था क्या उनका, नहीं था ना। Get out of here. ये तो कुकेश है, एक सेकंड। नहाने के लिए। Hey, I need this pump. पर बाय गोट बटन। I arguably am the best bike driver in केवी शालीमार बाग। ड्रिफ्ट बटन। ये तो सच बोल दिया। ओए होए, क्या किया था अभी मैंने। ट्रकिंग में शायद 10 साल लगेंगे, लेकिन जो भी है कर लेते हैं। रास्ता भी नहीं देखा मैंने। इधर से चलते हैं ना, उल्टा। ये तो कोकेश है।
आई लव यू मोर ब्रो। ओह, खेल खत्म बटन। Go hit my rod again, punk. Easy, easy. Who you think you fucking with? ये तो खेल खत्म ही है। अरे हट जा यार। अब तो हुआ ही नहीं। You straight mad now, fool. लेट्स ट्राई, गलती से हो गया तो बढ़िया। You think I give a fuck? हो गया। नो, मैंने गलत दबा दिया। गलत बटन दबा दिया। नो, फिर से गलत दबा दिया। नो, खेल खत्म। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड एक नहीं। What the fuck? नहीं पता मुझे। Who am I? नहीं पता। What's going on here? गेट हिंट दे, हिंट। या पाट 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 पाट। बिक्की। लवाओ। You hit it, punk. रुक। I'ma hit you back. Gonna make me shoot you? विच न्यू फ्रेंड डिड यू मेक नाउ? अरे मादर चौधरी। Apologize for that shit. आजा, आजा, आजा। I'm going after him. ओ शिट, ये तो शिटेश बटन है। अब कौन सा नया फ्रेंड बनाया? अरे ठीक है ना, प्रोग्रेस विद दनीस हटाया जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे प्रोग्रेस विद दनीस। Lady, what's up, girl? बिक्की बटन। ये तो कोकेश है।
सीधा ही जाना है मुझे। इधर उधर उधर करना है, सीधे जाना है। इधर टर्न मार लेंगे। पीक मेल कंटेंट बटन। टर्न का मारना है। टाइम है। ठीक है, समझ गया। ये है शायद, है ना? हाँ। बिग ए और बिग टी। ओ, बिग ए। बट द थिंग इज परफेक्ट टी बीट्स परफेक्ट ए, जनरली। इन बिग तो ए ही चाहिए यार। पर बटन। जिम आज क्या मारेगा बटन? आज तो जिम नहीं जा रहा यार। आज रेस्ट डे बटन। कल गया। आज मैंने क्या, आज कुछ नहीं करूँगा शायद। आज शायद फुटबॉल खेलने जाऊंगा बाद में। इंस्टेड ऑफ जस्ट रेस्ट। वाई एम आई अलाउड इन हेयर बटन? थ्री। तो मैंने, अच्छा, साइड बटन ना। वाई द फक एम आई अलाउड इन हेयर? तो भाई जो रॉबिंग किया था इधर ही किया था ना? रॉबिंग अंकल साहब इधर ही था फिर टी-शर्ट। गेट उड़ा ही दिया मतलब उस दिन के बाद। अब जरूरत नहीं है। हाँ वही है। Get off the court, dude. हाँ हाँ। तो राइडर लेना पड़ेगा। ये तो कोकेश है। मिलिट्री वाला, हाँ हाँ भाई। ना, पूरा ड्राइव करके जाना पड़ेगा फिर से। ये तो सैड है। Oh, well done. लो राइडर लेके बाइक से 10 साल पहले पहुंच जाओ। ये बाइक दे दो ना। ये बाइक दे दो ना। भग। ये तो नहीं ले रहा मैं। क्लोवर वो चला गया, भग। ये ठीक है। इसको क्या बोलते थे, रेंजर? ऐसे कुछ बोल रहा था। पेरेनियल। सेम सेट। भाई कल मैं जीबी रोड गया था तो ये तो क्रेजी है। ये हाय पिज्जा बॉय दो ना। ये पिज्जा बॉय दो ना। अरे ये गिर क्यों नहीं रहा है? ये पिज्जा बॉय दो ना। मुझे पिज्जा बॉय चलाना है। Buster. ये, अरे मैं तो रुक जा। आ, आ, इस तरफ क्यों चला गया ये? हट। हाँ दादा।
Those who cookish. All I dream of is you. अब दे रहा है बाइक बटन। अब क्या करूंगा बाइक का मैं? तो स्ट्रीम कितने मिनट डिले है पता नहीं। बिट रेट में दिखता है ना? पता नहीं। किसी में तो दिखता है। तो स्ट्रीम डिले देखता है एक सेकंड से। ये तो ड्रॉप्ड फ्रेम्स है लेकिन इतना भी नहीं है। 2673 के एबीपीएस है बिट रेट। पता नहीं डिले कहाँ दिखता है। कुछ तो एमएस दिखता है ना शायद। लेट मी चेक। तो ये दिख ही नहीं रहा। स्ट्रीम हेल्थ। पता नहीं। होगा कुछ। ड्रिफ्ट करेंगे हम तो ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है। एंजल पाइन साउथ एंड्रियास। कितने ट्रैकिंग मिशंस होते हैं? मैनी ट्रॉगिंग मीजन ओए। तो क्या बात बोल रहा था कि बताऊंगा? अरे बताऊंगा ना। 8 है ऐसे होते हैं। बताऊंगा तब बताऊंगा। जब बताऊंगा तब सुनिए। एंजल पाइन। हाई Caucasian बैच ऑफ 25-26। हाई रिधिमन बैच। ब्रो सेड ओके ब्रो आई सेड हाई रिधिमन। सुन लेना। अरे चो साले। ब्रो थिंक इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए हैं? आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रीमर्स भाई। लॉट ऑफ चैटर्स। दिखता नहीं है ना कभी कभी। चैट डिले हाँ। व्हाट द फक डू यू एक्सपेक्ट नासा का था। का कोल्ड। ब्रो सेड का कोल्ड। पर बटन। प्लीज बटन। टूटी हो न। नहीं हुआ ठीक है। ये ये ताहन जाना ना ताहन। ताल पर ही गया था। सत श्री अकाल फाइन शाइट। ये तो पर है। क्या आपको पता है हिजरू कौन है? हिजरू तो मैं ही हूँ दूसरे रूम से।
हाय रिया, रिया हाय जरूर। भाई लाल परी जो अबुनो बोलती रही थी आ, बंशी को, लाल परी। वो तो इसलिए, वो क्या गाना है क्या कोई? वो तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि पारी थी उसकी गर्लफ्रेंड है शायद इसलिए। ये तो फ्रेश है हाँ। ये क्या लोर है अभी लेकिन। मैं नहीं बताऊंगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। आई कीप थिंग्स सीक्रेट। अच्छा गाना है। रुक जाओ, लेट मी लॉक। दिस इमोजी। टफ बटन। लगा रहा हूँ, अब तो मैं लगा के रहूंगा। So, अच्छा हाउसफुल 5 का है? वो वाला। यस। वी गेटिंग कॉपीराइटेड विद दिस वन। रुक जाओ, प्रॉपर्टी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। होशियार बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी पी जाऊंगी अबे खड़ी खड़ी मंगवा दो कोई मुझे लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल भाई परी लाल परी लाल व्हाट इज परी दिस सॉन्ग भाई? कुछ भी गाते रहता है आजकल। I'm having this. जनरली कुछ भी। अबे भाई, सैंचेज लेके आता ना मैं, जो भी है। फ्री वे, रुको फ्री वे डैडी, या वे फेरर जो भी, रुकना है रुको। यस, ये बटन, ये बटन। नो। अब तो मैं सैंचेज ही लेके जाऊंगा, ये मिल गया। सैंचेज का नाम लिया, सैंचेज आ गया। भाई 505 लगाना। भाई मुझे मोड़ना नहीं है। मुझे म्यूट करना पड़ेगा फिर ये सेगमेंट, अनलिस्टेड वाले में। मैं गाता हूँ इससे अच्छा। पे 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 I'm going back to 545. If it's a 7 hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side. Stop and wait a sec. Oh, when you look at me like that, my darling, what did you expect? I'd probably still adore you with your hands around my neck, or I did the last time I checked. Not shy of a spark. The night twist at the thought that I should fall short of the mark. Ah! Stand by, though it's no harsher than the bar. The middle of an adventure is such a perfect place to start.
हाँ रुक जा, सच गा रहा हूँ। मम्मी आ गई थी, मम्मी। हाँ, I'm going back to 5:05 if it's a 7 hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Dun 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 dun. But I crumble completely when you cry. It seems like once again you had to greet me with goodbye. I'm always just about to go and spoil the surprise. Take my hands off of your eyes too soon. I'm going back to 5:05. If it's a 7 hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs and a smile. ये बेंचो थोड़े में ही डैमेज हो गया। अरे 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 अरे, डैमेज बटन। यह तो कोकेश है। भाई सर्फ कर्स लगाओ ना, लॉन्ड। लॉन्ड मेरा लगाने जाऊंगा मैं, मेरा खत्म हो जाएगा खेल। अरे आप साइड में माइंड स्पॉटिफाई चला दो। अबे देख, या तो मैं इसको एडिट कर देता, मतलब मेरे को एडिटिंग करने का समय मिलता, तो फिर मैं आराम से गाना चलाता फिर तो। ये तो गाने ही गाने बज रहे होते हैं स्ट्रीम में। क्योंकि फिर तो एडिटिंग है मेरे पास, तो फिर मैं एडिट करके सॉन्ग वाला पार्ट हटा दूंगा। मतलब जब मैं वो बनाऊंगा और स्ट्रीम को लिस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। स्ट्रीम में क्या ही करोगे मतलब देख। अगर एडिटेड वो होगा, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं। हाँ थैंक गॉड, ये तो सक्सेस है। हाँ, और 3 मिशंस को के इधर से एनर्जी लेके चलते हैं I guess। हो जाए मिशन फेल। भाई लोग क्या करते हैं पता है, या फिर अगर मैं अभी पास हो गया इसलिए होगा नहीं स्पॉन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तो कोकेश है। ये चैनल पे स्ट्राइक मार सकते हैं क्या? स्ट्राइक नहीं मारेंगे। स्ट्राइक क्यों मारेंगे, गाना चलाने से, गाना चलाने से स्ट्राइक करना मारते। और मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते। मैं दूसरे को कॉपी करूंगा तो मैं अगर कोई देखेगा नहीं तो नहीं होगा। होगा। सब होता है। तो क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब शायद, मतलब स्ट्राइक तो नहीं होगा, कॉपीराइट क्लेम होता। वो तो हो चुका है, बहुत बार हुआ है। जो रेडियो के गाने चलते थे पहले, मैं तो अभी रेडियो का ऑफ कर दिया, पता नहीं दिमाग में नहीं आया तब। तो पहले जो रेडियो के गाने चलते थे उसमें भी कॉपीराइट क्लेम आया था।
मतलब कुछ होगा नहीं, बस जो भी है, अगर गलती से मोनेटाइज हो गया ये वीडियो तो हमें थोड़ा मिल जाएगा पैसा। डिफाइन परसेंटेज कंपोजिशन, कौन सा वाला? वेट बाय वेट में पर 100 ग्राम में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। फिर मादर चोद, एंड चूतिया बटन। सोल्यूशन इज सॉल्वेंट, याद नहीं मेरे को, जो भी है। Baby, yes, I know you care. Bring it over to my place, and you be like, baby, who cares? I know you care. Bring it over to my place. I don't know what you did to me. Your body like speaks to me. और करो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन सैड बटन। हाँ डिजर्ट। काश मेरे 2 और सब्सक्राइबर हो जाए। ओ भाई सिनेमैटिक करता, सिनेमैटिक। I'm having that fight. ओ भाई सिनेमैटिक, क्या गेम प्ले है, सिनेमैटिक। ब्रो, अभी क्या हुआ देखा? क्रेजी शिट हुआ। वाह, मेरा हेल्थ आधा हो गया गिर गिर के। यह तो कोकेश है। गाइस वी हैव 2 व्यूअर्स, ओ माय गॉड। वेयर डू आई नीड टू गो? दिस इज इजियर देन बिफोर बटन, बट वी हैव द कॉप्स ऑन अस बटन। भाई कॉप्स कैसे हो? Bro's following me head to tail. Bro thinks he's a vector. Bro thinks we'll have a resultant. You want a beating, huh? ये तो दांत इमोजी है। Come on, damn it. You want to fight, asshole? ये तो सैड वाला इमोजी है जिसका नाम पेंसिल रखा गया है। इस चूतिए ने नाम रखा, पेंसिल मतलब होगा शायद सैड, लेकिन मतलब इतना डीप नाम क्यों रखा? ये खत्म, ये This ain't a fucking fun. और 2 बटे बचे हैं। Younger these days. पायलट्स आर लुकिंग यंगर दिस डेज बोले ये कला।
मुझे क्यों मार रहे हो? ओके। अच्छा नहीं, मुझे नहीं मार रहे हैं, मुझे नहीं घुसना मुझे इधर। आई हैवंट किस एनीवन। किस मी। ब्रो फॉरगॉट ही किस्ड मी। ब्रो लेट मी फकिंग इन ब्रो, व्हाट द हेल। व्हाट द हेल। अच्छा ये आदमी इसलिए। यह तो कोकेश है। लेट मी गो। पीसफुल आह ब्रो। दैट वाज एन इंसिस्ट किस, ओ माय गॉड। देखो पैशनेट किस करना है। कोई बात नहीं, you'll find someone eventually. Do not care. I am at 0 HP button. 11 तो मेरी भी ये होगी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कूल बटन। इज सो कूल। नो शिट शर्लॉक। वो ये पढ़ रहा हूँ यार, पढ़ के ही आया आज पूरा दिन। नो नो, डोंट गेट आउट ऑफ फालतू। ऊपर वाला पढ़। 11th में मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। मैं यही। वाई वाई। नर्ड इमोजी बटन। एल केब्राडोस। एल केब्राडोस तो उधर है। हाय एल केब्राडोस, कैसे हो? ये रहा। लेट्स सी मेरा सैन एंड्रियास नॉलेज कितना अच्छा है। अगर वो उधर है तो फिर मैं प्रो हूँ। ये ओके, मैं प्लान किया था यूजुअली, हाँ, इसी में जाना है। हाँ भाई, ऐस करते समय कैसा लगता है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैंने कब किया? You a joker or something?
हेलो। राइडर ने किया है बुले। आ, तो अब इधर से क्या लूँ मैं रास्ता। What the hell? What the hell ही? कब तक खेलोगे? पता नहीं। जब तक मेरी माँ मुझे अलाउ करेगी। You hit me. Raise up, dude. That's no mechanic bullshit. तो इस रास्ते पे है ना। शिट। चेंज कहाँ करूँगी? इधर। ये तो कोकेश है। You idiot. अबे डैमेज ज्यादा ही नहीं हो गया? तो पैसे के लिए तो खेल नहीं रहा। पैसे हैं अपने पास तो। हक के आना है मुझे। हगने का मन कर रहा है बटन। हगने दो बटन। ओके हगूंगी। मैं वैसे कब तक गया? पॉज कर। तब अब रेडियो सुनना। Jackets, not some flannel shirts. You're More rich, angry people complaining. WCTR. Until death do us part. Gosh, I remember that day like it was yesterday. Jennifer looked so beautiful. I knew I'd love her forever. And then she was driving along a canyon and her brakes went out. Well, I'm moving on now and remarried someone half my age. God, I love banging her. I started my life over with Crimson Executive Spouse Indemnity Services. Life can be uncertain, and you never know when your wife will be tragically taken away. Crimson set me up with a huge life insurance policy on my wife. I can't have her back, but now I have a second home. I was devastated when I found out my wife was cheating on me, and even more so when she fell underneath the train. I was nowhere near at the time, and my phone records proved it. My life changed forever. I was a real mess for hours. Thankfully, the week before, I'd met with Crimson. Thanks to Crimson, I've had a penile augmentation and am much more confident with women. Thank you, Crimson.
To have a Crimson Planning for the Future kit faxed to you, just dial 1-866-505-CRIM. Now it's the couple who each thinks the other is screwing America. I Say You Say is next with the Phillips. I'm Dr. Phillips, and I'm a liberal. Get to a 10-step program, That's then. 12 steps. Yeah, you only deserve 10. I'm also Dr. Phillips, and I'm conservative. Today on the show, is it okay to talk to people we were at war with once? And the skyrocketing price of buying off a politician. And we talk to people without health care who are genuinely happy not to be burdened with it. It's political debate and discussion from the right and the wrong side of the tracks. Let's go to the phones before right-wing anger engulfs my wife. Who's on the line? Hi, I have an eating disorder, so I moved to the West Coast. Oh, that's so sad. Maybe you need a support group with some caring friends. Yeah, maybe you should keep your finger out of your throat and eat a donut. 99% of the world wake up each day and eat dirt, and Queen Puke-a-Lot here can't keep a meal down? Boo-hoo! What do you expect, sympathy? This is Los Santos. People would give their right arm and left leg to live here. It's paradise, but you have to suffer to belong. If you can't take the heat, get out of the nuclear reactor. Next caller. Yeah, I agree with that caller about the nuclear plant next to the projects. You know, nature has a way of taking care of poor people. Tornadoes don't like poor people. Right, like I don't do laundry. I'm liberated, independent, and I have 3 maids, all of them on less than minimum wage. I mean, poor people are so happy to work for me. Especially when I help them unionize. Do you have a question? Sort of. Hey, you know, I got the same name as you. Yeah, Peyton. Oh, well, it's a family name. No, Mary. I was called Bruce by my parents, but I prefer Mary. It's much more... Yeah, feminine. No, biblical. Which, okay, I'm an atheist, but I love the Bible. I have 100 that I took from hotel rooms. Well, what's your question? Well, as a mother and a fireman, I was wondering what you guys thought about diversity in America. It makes me very nervous. Well, you see... I'm heavily into diversity. I'm like a man with a womb, lactating. Yes, I think you're a little confused. No, you're the one that's confused. I'm the one who eats Alaskan salmon and children from Alabama. I speak English, I eat German food, I practice French adultery, and I weigh as much as Vatican City. I'm an American. Okay, you're a nut. Get off our show. Mary, would you please stop eyeing the producer? I already slept with him. So did I. Ooh. Brian's on the line. Hello, Brian. Hi, my name's Brian. I work at Caligula's Casino in Las Venturas. Excellent. You take stupid people's money. I love it. Very capitalist. Hey, Brian, what's your concern? I did really well in the 80s, but the 90s are proving to be a real drag. The music is terrible. The recession is kicking my ass. Everyone I know is giving up recreational drug use. And the president is doing my head in. The 80s were really a materialistic time. I know. I'm a shallow person. Drown me. Look, we need a movie star to be president. It works. They're the best liars. They do it professionally. Well, so do all politicians. Next caller. Yeah, I want to talk about deforestation. Yes, that is a shame, what they're doing to the thick, beautiful redwoods north of San Fierro. I was talking about women. But you're right, San Fierro is half the problem. It ain't natural and it's un-American. Look, infatuation and disillusionment is the American way, but it works. Just look at places without professional wrestling and porno. Porno is the exploitation of women. Some people want to be exploited, like factory workers. Others want to be degraded. I mean really, really degraded. Like a liberal having his way with you. God, it makes me feel so dirty. Talk more slowly, please, dear. Moving swiftly on from my wife. You're on I Say, You Say, and what's your question? Yeah, this is Brad. I'm really into pleasuring myself. Good grief! Well, that's my business, but I feel discriminated against. Not only can I not practice my hobby in the privacy of my own garden or car, but my movies are rated as pornographic. I mean, let me ask you a question. Threesomes, right? Well, that's where our problem started, yeah. Yes. The producer. Well, right. I ran a movie with 2 chicks and a dude, and it's called a porno. People look at me like I'm some sort of creep, but it's natural. But I ran a movie with 2 dudes and a chick. It's all in French, probably wins awards, called an art house love triangle. But it's revolting. No, you're revolting. Get off the airwaves and into therapy, buddy. Oh, that's the problem with men. You're imbeciles. And yet you married me. God, don't rub it in. I did. I was desperate. That's all we have time for, luckily. This show is headed downhill. When you take the worst qualities of an elephant and a donkey, you get a lot of shit. We'll see you next time on I Say, You Say. You said you liked me in that donkey suit. Jackass. I Say, You Say is heard only on WCTR. Be thankful. San Andreas just can't get enough of the Glory Hole theme park. Glory hole, where strangers become friends. Glory hole, you don't need to know names.
It's the place for magic and adventure. We all like speaking rodents to entertain and educate our kids. And now with Jerry Gerbil, the kids have someone they can really relate to. Kids, come and play. I've got puppies to show you. Yay, a giant speaking rodent! Go on, kids, have fun. I know it's safe. Jerry's wearing a latex bodysuit. See you later, Mom. We're off to have fun with strangers. Glory hole, it will hurt, but it's worth it. Ride the log flume. Live the adventure of the flaming screen machine. Glory Hole Theme Park. Glory hole! Open every day till 3 a.m. Come live the mystery. Is the world ending? We hope so. We need the ratings. The news is next. Leanne Forget, WCTR News. News with the bottom line in mind. Top news stories. Was Moses really from Ohio? Chairs, the silent killer in your home. Now, WCTR Traffic and Transit. After months, all bridges have been reopened. Bone County, Tierra Robada, and Las Venturas County are now linked up with the rest of the state. Locals celebrated by mass outbreaks of xenophobia and inbreeding. Also, police are celebrating the removal of a major crack cocaine ring by undercover police that has virtually stopped the flow of drugs into Los Santos. Richard spoke to a man on the scene. That's right, Leanne. It's another victory for Prohibition. Police are really celebrating after this one. One officer told me his amazing true life story of how he infiltrated a drug ring and how cool it was to get paid to get high. Yeah, I was undercover smoking crack every day. You know, just to be one of them. I even took my wife undercover and made her a crack whore. Say hello to the newsman, bitch. Hey, don't I know you? The rusty trombone, right? I doubt it, Tramp. You're crazy. Back to you, Leanne. Police are struggling to solve the mystery of a container ship found deserted and full of bodies. The FBI is investigating. And government officials denied the existence of an area of Bone County that isn't on the map. Someone who was unprepared to be named said the so-called place that isn't called anything doesn't exist. And if it did, we'd name it something. And where is Mad Dog, wonder record execs? The rapper has battled alcoholism and egomania for many years and recently missed a concert in Las Venturas. Staying in Venturas, it used to be a patch of desert, then it was a mob town. Now it's the corporate headquarters of America. Richard explains from the streets. That's right, Leanne. It used to be a patch of desert. Then it was a mob town. Now it is the corporate headquarters of America. Back to you in the studio. In foreign news, we have war, famine, pestilence, and a lot of envy aimed at our way of life. Stay at home. It's better that way. I'm Leanne Forget, WCTR News. Stay alert. They're after us. This is well-known philanthropist Big Smoke, and you're listening to WCTR. Make a difference to your community. Keep our cities drug-free. Look, I'm doing my bit. How are you helping? The most boring show with a brand new host. Entertaining America with Laszlo. Welcome to Entertaining America. This is Laszlo. I gotta say it, pardon me, but don't call it a comeback. I've been here for years, just unemployed. But I am back, running the media. God, I love this West Coast vibe. Everybody here's so laid back and lazy. I'm here with a man who gets paid to talk for a living. It's incredible. What a concept. He's called a rapper. Oglock, how are you? Oglock? It's OG Loke. OG Loke. You hear me, player? Yes, of course. I hear you. You're only a few feet away, man. Listen, I'm a big fan. I love rap, I think. I mean, singing songs about yourself. That's awesome. How you living? Straight. Really? Are you really straight? What? You gonna question me? Dude, it's cool. If somebody passes it to me, I don't ask questions. It's probably not laced anyway. So, who out there wants to talk to OG Loke? Caller, you're on Entertaining America. I love the way you rap about the Louisiana Purchase. Straight. You know the French told us Louisiana so we would have a place to show our tits. My point exactly. Yeah, we need more naked liberty. Exactly. Look, I'm no rapper, even though I dress like one, but I think I could really get into, getting hammered, singing about setting things on fire, shooting up funerals, ba-da-ba-ba-ba, striking poses, smoking a lid. Exactly. You see, the Constitution was written on reefer by dudes with wooden teeth. You see, my clothing company, Low Down, home of the G, says this. I love reefer. It's the rules if you're a rapper. Wow, those sound like some great rules. You get a lot of flack in the media these days. At a recent press conference, your manager came to your defense. A lot of people say gangster rap
is misogynistic posturing by fake-ass idiots who spend more time in drama school than they ever did pimping or hustling dope. Well, I assure you, OG Loke is the real thing. He's hated women all his life. He's sold drugs to school children. He's murdered innocent people just for kicks. But he rhymes like an angel. And I assure you it's all in a good cause. So either way, you can feel good about yourself listening to this music. Well, that was very informative. Big Smoke is doing a lot for the community, or to it. He sounds like a great guy. So, I want to get in on this rap thing. Do I have to break dance, do the windmill? Hey, can you body pop? Come on, Laszlo. You know OG ain't no playboy. I ain't down with that shit. It ain't gangster. I walk the walk. You know what I'm saying? Fresh. Yo, I'm down. I'm into walking too, but I was thinking maybe we could have a break off, I could spin on my back. You being funny? I'm trying to be. Watch it, fool. I warn you. I got the streets. I got a rep. Me and my man Smoke.
you out of your mom. You want to get murdered? You punk ass bitch. Shit! Hey, don't let me kick your ass. Look out! Stop photographing those women! I'm really losing my shit now. Yeah? Have you ever smelled a clogged toilet? Rather get my ass towed. Oh, read the dirt shit. See you, brother. Roller coaster! Ooh, 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 ooh.
when you set up the needle. Hey, if you don't need it no more,